नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन सेक्शन। एक बहुत शानदार सेक्शन है। इसमें हम टैक्स बचा सकते हैं और सेल ऑफ कैपिटल गेन एंड फर्दर कैपिटल गेन if you are invested in residential house property where you will get the an exemption. As per section 54F, we will discuss that capital gains tax exemptions is made simple, right? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जानना चाहते हैं किस किस को अप्लीकेबल होता है. हु कैन क्लेम दिस एग्जेम्पशन? फर्स्ट वन, एलिजिबल असेसी इज बीइंग एन इंडिविजुअल एंड एचईएफ. इंडिविजुअल एंड एचईएफ को ओनली सिर्फ अप्लीकेबल होता है. चाहे आप कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इसको अप्लीकेबल नहीं होता है. अदर देन एचईएफ इंडिविजुअल इसको अप्लीकेबल नहीं होता है. और एक नेक्स्ट, विच असेट इज क्वालिफाई? सर, हम जानना चाहते हैं कौन सा असेट सेल करने के पर सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलता है. You can sell any capital asset, any long-term capital asset other than residential house property. That might be includes land or plots or jewelry or any other capital asset you can sell and where you can claim it an exemption, but except residential house property. नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं क्या क्या कंडीशंस मीट करना चाहिए टू क्लेम द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F. व्हिच आर दोस कंडीशन यू शुड बी satisfied? First one, asset is requirement. There must be a long term capital asset. Remember that there must be a long term capital asset is the first condition. Second condition is an other than residential house property. There are two conditions must be satisfied. Then you must invest in one residential house property, one residential house in India within a specified time frame to claim this exemption. That specified time frame we will discuss in later for further slides. Next, ownership limit. On the date of sale you must not own more than one residential house excluding the newly purchased house. If you must not own more than one residential house, इसका बोलना का एक ही है. सिंपल तरीके से आपको समराइज कर देता हूँ. ओके, देयर मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहना चाहिए और अदर देन रेजिडेंशियल हाउस सेल करना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, हम सिर्फ खाली एक हाउस प्रॉपर्टी में, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन, ऑन द डेट ऑफ सेल, on date of sale assessee should not own more than one residential house property, more than ownership of one house property. सर, मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे दो हाउस प्रॉपर्टी है, कैन आई क्लेम अगेन एग्जेम्पशन इन सेक्शन 54F? आंसर इज नो. You cannot claim more than two residential house. If you are already having in your name two residential house property, you cannot claim more than you cannot claim under section 1 and you cannot claim under 54F. ना हम जानना चाहते हैं सर कितने टाइम लिमिट तक इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आज देखो कितना टाइम लिमिट तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. इधर दिखता है आपको सेकंड नंबर. ये है सेल डेट. सर, सेल डेट में टू ऑप्शन है. आइदर यू कैन परचेज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और यू कैन कंस्ट्रक्ट न्यू रेजिडेंशियल हाउस property. There are two options available. Sir, if you wanted to purchase residential house property, time limit is given 1 year before the sale of asset of 2 years after the sale of asset. करीबन आज का डेट पे आप कुछ भी सेल करते हो, पिछले एक साल में कुछ भी परचेस करते हो, वो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा. और आज के डेट से नेक्स्ट 2 इयर्स में आप जितना भी परचेस करते हो उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा. टाइम लिमिट बिफोर 1 ईयर दिया गया है परचेजेस के और आफ्टर 1 ईयर दिया गया है. ओके, अब नहीं सर हम परचेस करना नहीं चाहते हो, आप कंस्ट्रक्शन में जाते हो, हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको इसके लिए 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट इज अ टाइम गिवन. आपको 3 इयर्स टाइम दिया है ओरिजिनल एसेट सेल करने से. ठीक है. आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशन यू कैन नॉट परचेज. दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रिस्ट्रिक्शन इज गिवन अंडर दिस सेक्शन. दैट इज कॉल्ड एज that is called as restriction on purchase of another asset. आज सेल कर रहे हो, आगे जाके आप उसको आज परचेज कर रहे हो, आगे जाके उसको विद इन स्पेसिफाइड मतलब 2 साल और 3 साल तक उसको सेल नहीं कर सकते. सेल करे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लेट अस डिस्कस. हाउ मच टैक्स यू कैन सेव under section 54. So let us take an example and we will discuss about the how much tax you can save. Let us take an one asset sale values would be 1 crore and purchase value is on 40 lakhs. How much you gain? 60 lakh. How much you gain? 60 lakh. To claim 60 lakh exemption you must invest entire 1 crore towards purchase of residential house property or construction of residential house property. That means total net consideration, net entire
net sale consideration, you must invest in residential house property to claim entire full exemption. That means entire 60 lakhs amount, 60 lakhs capital gain, you can claim it as an exemption. First condition. Second condition, no sir, I don't want to invest entire 1 crore amount, I wanted to be invest only 60 lakh rupees. Then in that case, 60 lakh rupees multiply with the 60 lakh consideration invested divided by total net consideration, that is 1 crore. Then partial amount won't be allowed to be an exemption, to claim exemption. If the partial amount is invested, proportionate amount exemption will be available. That means capital gain multiply with the total invested divided by net consideration. ओके ठीक है, हमारा एग्जांपल में 60 लाख कैपिटल गेन है, हम 60 लाख ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब सर 60 लाख नहीं मिलेगा? आंसर इज नो, आपको 60 लाख पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, ओनली प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ करना चाहिए, जो भी अमाउंट आता है उतना अमाउंट आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट डाउट आता है सर कितना मैक्सिमम लिमिट क्या है टू क्लेम एन एग्जेम्पशन। ए सेक्शन में आपको मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो। इवन दो इफ यू आर इन्वेस्टेड मोर देन 10 करोड़, सर मेरा 20 करोड़ नेट सेल कंसिडरेशन था, पूरा का पूरा 20 करोड़ डाल दिया, फिर मैं 15 करोड़ कैपिटल गेन कर लिया उस असेट से, can I claim a entire 15 crore exemption? Answer is no. Maximum exemption limit in this section they are specified in only 10. Next, सर अभी अभी मैं सेल कर दिया, ठीक है, अभी अभी सेल कर दिया, मैं अभी नेक्स्ट 3 इयर्स का टाइम है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अगले साल में आगे जाके 3 इयर्स में अगर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो आप, वो अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप खुद आपका अकाउंट में पैसा नहीं रख सकते हो, ये अकाउंट स्कीम ऐसा हो सकता है आपको एक अकाउंट स्कीम ऐसा हो सकता है, ये पैसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज करना है, नहीं अगर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज करना है, बट इससे ज्यादा इससे कहीं पे और दूसरा रीजन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। When is capital gain account scheme is mandatory? If you haven't utilized the net full consideration before filing if your income tax return, you must deposit the balance amount in the capital gain account scheme. Then before the due date of filing. टाइम लिमिट क्या है? देखो 2 साल तो आफ्टर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आफ्टर सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, देयर इज गिवन फॉर परचेज, if you want to purchase there are 2 years time limit is given, if you want to construct 3 years time limit is given, 2 years 3 years, okay. If you want to claim further, if you want to invest in future, that is within 2 years or within 3 years, then you must deposit in capital gain account scheme. sir कब deposit करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट, कब तक डिपॉजिट करना चाहिए? इसमें ये बोलता है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न यू मस्ट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स, यू आर एलिजिबल टू claim exemption. One more condition, then how much maximum can I deposit in capital gain account scheme? That is only up to 10 crore, because in this section you can claim an exemption up to 10 crore only, then in this account the maximum allowable limit is 10 crore only. Now very important, सर एग्जेम्पशन तो क्लेम कर लिया, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, what is the provision, what is the remedy available, and what is the holding period, what is the lock-in period is available? Now let us going to discuss in this chapter. What if you sell the new house early? That means original transaction you sold asset and claimed an exemption under section 54 by purchasing a new residential property. You sell the new house within 3 years of purchase or construction, tax consequences would be the previously exempted capital gain becomes a taxable long-term capital gain in that year. In which year you are you sold that particular house property, in that year you are going to pay tax, you are going to pay tax under long-term capital gain if you are sold. The lock-in period violation, purchase or construction of conditional property cannot purchase another house property within 2 years from the date of sale of original asset, cannot construct another residential house within 3 years from the date of sale of original asset. Violation means revocation. If you violate this condition, then your earlier exemption become the taxable under long-term capital gain in that year. That means lock-in period. सर हाउस प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, एग्जेम्पशन भी क्लेम कर लिया, फिर भी आपको
हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, एग्जाम्शन भी क्लेम कर लिया। नेक्स्ट अगले 2 साल तक उसको आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज किए हो, नेक्स्ट 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल असेट, फ्रॉम द सेल ऑफ ओरिजिनल असेट, you cannot you cannot sell another 2 years. That means if you are sold within 2 years, then you are liable to pay tax, and you are liable to pay tax as a long term capital gain in that year. If you are construction, you can't sold within 3 years from the date of transfer. Here the wording, from the date of transfer or sale of the original asset, from that date onwards within the 3 years, if you are sold the property, then you have to be pay tax under long term capital. Next, some critical points in this entire section. You must remember that one thing is net consideration rule. Unlike section 54, you must invest the entire net sale consideration, not just capital gain amount, to claim full exemption. If you want to claim in this section, you must invest full entire net consideration, not capital gain. As per section 54, if you are invest sale of residential house property and invested in also residential house property, where you can claim, if you want to, if you are invested only net capital gain amount, then you are claiming an exemption full amount. But as per as section 54F, you cannot claim full exemption if you are invested only capital gain amount. That means you must invest full net consideration. Okay, one house ownership. At the time of transfer or at the time of sale of original asset, you must own only one residential house property. That means you must have only one house ownership. If you are having more than two house ownership, then you are not eligible to claim in this exemption. Next, capital gain account scheme is mandatory. If the funds are not utilized before filing your ITR, deposit the balance into capital gain account scheme before the date of protest your claim. India early investment. The new residential house must be located in India. Overseas property investment does not qualify as a. Okay, you must remember that all this checklist: verify your eligibility first thing, verify your residential ownership status second one, and calculate the net consideration and how much should be invested, and plan your investment timeline. If you want to invest in 2 years, or if you are investing construction in another next 3 years, then plan accordingly and use capital gain account scheme if needed. If you are not invested before filing the return of income for that particular assessment year or financial year, you must investment in capital gain account scheme. This thing also you remember, and respect the lock-in period. If you are not respect the lock-in period, then again you are going to pay tax under long term capital gain. Thank you.